हमें डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन है टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस वेयर फर्स्ट केस है इवेंट E tail appears on one coin, event F one coin shows head, and second case event E है no tail appears and event F है no head appears। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। So as two coins are tossed once, तो जो सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस विल हैव फोर आउटकम्स HH, then HT, TH and TT। So therefore N of S is equal to 4। तो चार सैंपल पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट केस हम लेते हैं, इवेंट E है tail appears on one coin, तो इवेंट E is tail appears on one coin। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम्स जो है that would be HT right and TH, तो दो ही फेवरेबल आउटकम्स है। सो therefore probability of event E will be 2 out of 4, okay, that is equal to half। अब इवेंट F देखते हैं, इवेंट F दिया है one coin shows head, one coin shows हेड, यानी एक हेड दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे इवेंट F के, इट वुड बी TH and HT, right? So therefore probability of F will be again 2 out of 4, that is equal to half। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए हमें इनका इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। सो देयरफॉर E इंटरसेक्शन F, ये दोनों इवेंट्स में जो कॉमन आउटकम्स है, द कॉमन आउटकम्स आर HT, यहाँ भी HT है, यहाँ भी HT, एंड TH TH, दोनों के दोनों आउटकम्स कॉमन है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F, probability of E intersection F is again 2 by 4, which is also equal to half। और अब हम conditional probability ढूंढ सकते हैं। So therefore probability of E given F, this is obtained by probability of E intersection F divided by probability of F। अब E intersection F की probability है half and F की probability even that is half, so half divided by half, so the required probability in this case is 1। अब इसका second case डिस्कस करते हैं। Let's see the second case। second case में इवेंट E देखते हैं क्या दिया है। इवेंट E दिया है no tail appears, इवेंट E is no tail appears। तो यहाँ पे तो एक ही फेवरेबल आउटकम है and that is HH, right? No tails, यानी both heads। So therefore probability of event E will be 1 by 4। नेक्स्ट लेते हैं इवेंट F। अब इवेंट F दिया है, लेट्स सी व्हाट इज इवेंट F। नो हेड अपीयर्स, इवेंट F इज नो हेड अपीयर्स, नो head
appear. तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है इवेंट F के लिए, नो हेड यानी दोनों टेल्स. So therefore probability of event F, this is also 1 by 4. And now we finally find E intersection F. E intersection F, अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है. So this is an empty set. So therefore probability of E intersection F, the probability value will be 0. And now we can find the conditional probability. Probability of E given F. The formula is probability of E intersection F divided by probability of event F. अब intersection की probability है 0 and event F की probability है 1 by 4. The final answer is equal to 0. Determine probability of E given F, यानी conditional probability ढूंढनी है. और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो है a die is thrown 3 times and event E है 4 appears on the third toss and event F है 6 and 5 appears respectively on the first 2 tosses. तो जो इवेंट दिया है, जो एक्सपेरिमेंट है वो है, तो a die is thrown 3 times. अब इसका सैंपल स्पेस तो हम नहीं लिखेंगे बिकॉज 216 आउटकम्स आएंगे, राइट. सो वी कैन एटलीस्ट राइट n of s. So n of s could be written as 6 cube, right. For each die 6 आउटकम्स है और 3 डाइस है, तो 6 into 6 into 6 that is 6 cube. So n of s हो जाएगा 216. अब इवेंट f देखते हैं. इवेंट E पहले देखते हैं. इवेंट E है 4 appears, आउटकम 4 appears on the third toss. मतलब जो तीसरा आउटकम होना चाहिए, ओके, उसमें 4 आना चाहिए थर्ड टॉस पर. तीसरे आउटकम पे हमें 4 दिखना चाहिए. तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, this could be written as 1 1 4, फिर 1 2 4, next is 1 3 4, 1 4 4, फिर आ सकता है 1 5 4, then 1 6 4, right. 1 2 3 4 5 6, and if you see the third outcome over here, okay, is 4 appears on the third toss. वैसे ही हम लिख सकते हैं 2 1 4, then we have 2 2 4, फिर आएगा 2 3 4, next 2 4 4, 2 5 4, 2 6 4. Same thing with 3. So you have 3 1 4, then 3 2 4, 3 3 4, फिर 3 4 4, next is 3 5 4, and आखिर में 3 6 4. सेम सीरीज हम 4 के साथ भी लिख सकते हैं. कैन हैव 4 1 4, फिर 4 2 4, फिर आएगा 4 3 4, next is 4 4 4, then 4 5 4 and 4 6 4. Likewise, we have 5 1 4, 5 2 4,
5 3 4, 5 4 4, 5 5 4, 5 6 4 और फिर आएगा 6 के साथ 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4 and 6 6 4, right? तो ये टोटल हो गए 36 आउटकम्स. So therefore we can say probability of event E is 36 by 216. So that would be 1 by 6. अब इवेंट F देखते हैं. इवेंट F दिया है 6 and 5 appears respectively on first two tosses. Okay? इवेंट F पे फोकस करते हैं. 6 and 5 appear on the first two tosses respectively. First two tosses respectively. मतलब पहला 6 आना चाहिए, दूसरा 5, ओके, तीसरा तो कोई भी नंबर हो सकता है. तो यहां जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे तो 6 5 के साथ यू कैन हैव 1, 6 5 2, next we can have 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 and 6 5 6. तो यहाँ probability of F would be 6 upon 216. तो ये आता है 1 by 36. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हम ढूंढेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन. तो E इंटरसेक्शन F यानी कॉमन एलिमेंट, दोनों में देखें कौन सा एलिमेंट कॉमन है. We can have only 6 5 4. ये एक ही है जो कॉमन है, 6 5 4 and here also we have 6 5 4. So इंटरसेक्शन में तो एक ही एलिमेंट आएगा, that is 6 5 4. So therefore probability of E intersection F is 1 by 216. And now we can get the required probability, right? So therefore probability of E given F, इसे हम easily ढूंढ सकते हैं as probability of E intersection F upon probability of F. अब numerator value we had got it as 1 by 216, right? And probability of F, that was, you can write 1 by 36 या आप 6 by 216 भी लिख सकते हैं उसे. तो इसे हम ऐसे ही लिखते हैं 6 by 216. तो 216 तो कैंसिल हो जाएगा. तो required probability would be 1 by 6.